Most beloved MLA sir, Nikamin ji, respected ex-MLA Samlung Mosang ji, very senior leader, ex-MLA KG Singfu ji, TNN Inao ji, public leader, Molin Aga ji, public leader and OSD is the chief local MLA here. Arobek, Sakma, Hazong, Jabbe, Punlok, Malok, Bablok. মনে তো হল সাংমা হদাতি হয় কান হদা হওয়ার এই সুযোগ ইরে বিগিনিং এটা শুরুয়াত এদিকে গুরি আমার আরো বহুত মিলে ঘুরিব আমি সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছিলাম পার্লিয়ামেন্টারি কমিটি দিয়েছিলাম দিল্লি যেছিলাম ঘুরি ফিরি যে ইকোনো জনগণত আদালত জনমত রেফারেন্ডাম পাবলিক রেফারেন্ডাম ঘুরি বাইতেন বাধ্য ইয়ে কারণ সিটুন যে হরানি আছে সেনি তারা ইমপ্লিমেন্ট নকরতন বা আমি আমার তো নহতকানি ভুল হইয়ে আমি শুধু দিয়ে তারা নমাদে আমার অ্যাপ্রোচ আন সলিউশন আন হিরিকিরি বেগম সেই ব্যাপারে মুই হয়কান হদা হম There are a lot of misconceptions about the whole Chakma Hazang issue, partly because we were victims of history in the past, but now and in the recent decades we have become victims of politics. Some of the well-known facts and figures has been inflated and made a mole like a mountain. For example, the fear of demographic, population explosion, so-called population explosion. We were told Chakmas are growing like anything. This is not true. Based on the census, population was 47,471. So this was one narrative that was built to magnify the problem of the Chakmas and the threat, perceived threat that it poses apparently to the local indigenous people. Let me tell you this, and I say this with full responsibility. The local indigenous people, be it Singpho, Tangsa, Khamtis, Mismis, Deoris, and many other neighboring communities, they are very good and very innocent. But, as I said just before, because of the politicization of the issue, they were misled indigenous population.
This is not correct. Because as the previous speaker, KG Sikhoji himself said, one of the reasons why Chakmas and Hajongs were brought here and they were accepted was because Chakmas are also tribals. वो लोग भी हमारा जैसे ही नाक चपटा है, उनका चेहरा मिलता है, वो भी बेम्बू शूट हमारे जैसे खाते हैं. This was one of the things. This was one of the determining criteria for the rehabilitation of the Chakmas and Hajongs in Arunachal Pradesh. उस वक्त नेफा था. नहीं तो सोचिए गवर्नमेंट के स्कीम में 1964 में क्या क्या सोच के रखा था कि बिहार लेके जाएंगे, अंडमान निकोबार लेके जाएंगे, तो फिर नेफा क्यों लाया? सरकार ने लाया हमें. So we must confront fiction with facts, and this is one of the things that stands clarified today. इसीलिए बहुत ही positive development है. Now we do not hear so much about population explosion. दूसरा कंसर्न सॉल्यूशन का हार्डल बन के जो आया है वो ये है कि इंक्रोचमेंट, सो कॉल्ड इंक्रोचमेंट हो रहा है. तो सरकार ने अभी तो डिमार्केशन शुरू किया है, मेरे ख्याल से खत्म भी हो गया, एक्सेप्ट सम वेरी ओल्ड विलेजेस जैसे हमारा गांव विजयपुर इस स्टिल टू बी सर्वेड, अरण्यपुर, शिलोंग पहाड़, मोदकोनाला, मोदोदीप. सो ये भी प्रॉब्लम, परसीव्ड प्रॉब्लम इंक्रोचमेंट का, वंस द डिमार्केशन इज कंप्लीट ये भी खत्म हो जाएगा. सो ये भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है. सो दिस इज गुड बिकॉज once the concerns are raised and these concerns are brought to a closure, we can now search for a solution. So what is the way forward? Solution ढूंढना for such a long protracted issue, चकमा हाजोंग जैसे complicated complex problem को कैसे solve करेंगे? It's not an easy task. But I feel honored to be part of this movement. When we started this way back in 1991, I was a student in Delhi. माहौल इतना खराब था, हमें यहाँ पे मीटिंग या एक साथ मिलने का इतना अवसर नहीं मिलता था. The situations were very tense and it was a difficult, trying time. But the positive thing is, hard times, trying times, bring resilience and strength, a moral force that gets generated, built up in the hearts and minds and souls of the people, which is a very positive thing that happened. The best way for a solution is assimilation or integration, because India is a land of unity in diversity. We all know that. And Arunachal is a perfect example. यहाँ पे we have